Hello everyone. Today we will solve AIB 18 question paper so that those who are preparing for AIB 19 exam can understand how the question will be formed in the upcoming exam. Okay. So now let's move. Okay. Now let's see the question papers. Okay. Questions are question number 1. Which of the following which of the following is the time limit given under section 17 of the Transfer of Property Act? Which of the following is the time limit given under section 17? Okay, so the correct answer is the correct answer is either A or B, whichever is longer. That is, अगर हम लोग सेक्शन 17 ऑफ टीपीए एक्ट पढ़ेंगे तो इधर लिखा है देखना, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, okay, life of the transferee and a period of 18 years from the date of transfer. So ये both are mentioned, so the correct answer should be option number C. Okay, now moving to next question. Which of the following is not negotiable instrument as per the NI Act 1881? The correct answer is our check. So check is not a negotiable instrument as per NIA Act, that is Negotiable Instrument Act 1881. Okay, now moving to next question. देखिए, moving to next question. In the light of Negotiable Instrument Act 1881, at what rate interest will be charged? Okay, if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument, that means अगर negotiable instrument में कोई भी interest mention किया नहीं गया है, then what will be the rate of interest? The correct answer is our option C, that is 18% per annum. Okay, now moving to next question. देखिए, within what period, okay, from the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceeding for the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. Okay, the correct answer क्या होगा? The correct answer should be option A, that is 6 month hour. Okay, now moving to next question. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, what what is the minimum percentage of affected families, okay, that need to be given their prior consent for acquiring land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act? कौन सा होगा? ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 75%. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, imagine an IPL team set up a company to sell its own range of clothes. Okay, what type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? Trademark. The correct answer should be सी, दैट इज ट्रेडमार्क. क्या बोला है? सपोज कोई भी एक आईपीएल टीम ने कंपनी सेटअप किया है, किसके लिए? टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स सेल करने के लिए. देन व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज बाय द टीम? तो आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी ट्रेडमार्क. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट usually last for? That is, correct answer is option C, that is 25 years. Okay, now moving to next question. Okay, देखिए इसमें क्या लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the concept of freedom of trade and commerce, okay, mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of the following country. कौन सा? क्या क्वेश्चन क्या बोला? देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो ये मेंशन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फंडामेंटल राइट में. तो ये कहाँ से मोटिवेट किया गया था? द करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. ओके, द करेक्ट आंसर इज आवर यूनाइटेड किंगडम. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following writ is used to enforce the performance of the duties, um, public duties by the authority? Okay, the correct answer is what are the following in, issued to enforce the performance of the public duties by the authority? The answer is prohibition.
Okay, now moving to next question. Now moving to next question. Okay, moving to next question is, which of the following constitutional amendment act, okay, had made the provision for publishing Hindi translation of the constitution? The correct answer is option A, that is 52nd amendment of the constitution. क्या किया था? Had made the provision for publishing Hindi translation of the constitution. Okay, Hindi translation हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था? 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द कलरेबल लेजिस्लेशन? ओके, दैट कलरेबल लेजिस्लेशन का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, now moving to next question. Which of the following Constitution Amendment Act was passed in the light of the advisory opinion received in Berry Biriwari case? The correct answer क्या है? The correct answer option number A, that is the Constitution Fourth Amendment Act 1955. The correct answer is our option A. Now moving to next here. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sexual harassment of a working woman, okay, at her place of work, may also be considered as the violation of which of the following provision of the constitution? क्या बोला? देखिए, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ, अगर कोई भी वुमेन का सेक्सुअल हेरासमेंट होता है, ठीक है, एट हर वर्क प्लेस में होता है, मे ऑल्सो बी कंसिडर एज द वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, में कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा? द करेक्ट आंसर इज आवर आर्टिकल नंबर 19 जी, ओके, 1 जी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 1 जी, दैट इज जो जी क्लोज है हम लोग का, वो क्या करेगा? वो वायलेट करेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन हैज बीन अप्लाइड टू रिजॉल्व द conflict between the article number 25 clause 2 subclause B and 26 article number 26 clause B of the Constitution of India? Correct answer is doctrine of casus omniscius. Okay, the correct answer is doctrine of casus omniscius. Okay, moving to next question. Moving to next question is, in which of the following situation Indian Penal Code 1860 may not apply? Okay, may not apply. कौन सा सिचुएशन में होगा? देखिए, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री, ओके, एनी कंट्री, ये अगर कोई भी कंट्री में होता है देन अप्लाई नहीं होगा। बाकी सब में देखिए, एन ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, ये अप्लाई होगा आईपीसी। एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, ओके, ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है देन ऑल्सो आईपीसी विल बी अप्लाइड। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पेनल कोड? ओके, तो अगर हम लोग सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे तो इधर क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 6 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर amusement, okay, in the course of such fencing while playing fairly, A hurts Z severely, which of the following offense is committed by A? Okay, अगर कोई भी एक अम्यूजमेंट गेम के लिए ए एंड बी ने एग्री किया गया कोई भी खेलने के लिए, एंड इन ड्यूरिंग द गेम ए हर्ट्स जेड, तो क्या ऑफेंस हुआ है? देन एंड जेड is the amusement for in the course of such fencing while playing fairly, a mar at the, that the correct answer would be no offense. Okay, no offense. Okay, the correct answer should be no offense. Now for next question, देखिए, moving to next question, in which of the following situation right of private defense cannot extend to the causing death? कौन सा आंसर होगा? correct answer होगा, in case when the assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust. Case when assault is causing apprehension of murder, अगर देखिए, इन क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, दैट मीन्स कॉजिंग डेथ एक्सटेंड कब तक करेगा? अगर
assault is causing apprehension of murder होगा, then ये causing death होगा. In case where the assault is reflecting the intention of committing rape, then also causing death होगा. In case when the assault is reflecting intention of causing simple hurt. Okay, in case when the assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust, तो unnatural lust. So in तीनों केस में the correct answer is option number C. Okay, बाकी सब जितना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में क्या होगा, इट विल लीड टू एक्सटेंस ऑफ कॉजिंग डेथ. ओके, कॉजिंग डेथ बाकी सब में होगा. ठीक है, द करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज इन व्हेन द रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ सिंपल हार्ट. अगर सिंपल हार्ट होगा देन ये that right of private defense cannot be extended to causing death. Okay, now moving to next question. देखिए, for which of the following section of the Indian Penal Code 1860 the word benefit does not include pecuniary benefit? Okay, the correct answer is section number 156. Okay, that is option C. That is section 156 of the um, IPC. Okay, IPC. Now moving to next question. X intentionally pulls up a woman's veil without her consent, intending to annoy her. As per the Indian Penal Code 1860, which of the following offence has committed? The correct answer is criminal offence. Okay, now moving to next question. Okay, next question देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पनिशमेंट इज प्रेस्क्राइब अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 फॉर अ पर्सन हु मेम्स any minor in order that such minor may be used for the purpose of begging? The correct answer is imprisonment. The correct answer is imprisonment for a life and fine. Okay, now moving to next question देखिए, act threatens, okay, to publish defamatory libel, concerning why, unless Y gives him money, which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code? The correct answer is imprisonment up to 5 years, or with fine, or with both. That is punishment all are optional. That is either 5 years होगा और हो सकता है फाइन. ओके, और बोथ भी हो सकता है. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following sentence is an which of the following sentence is an assistant judge authorized to pass as per the criminal procedure code 1973? uh, the correct answer is sentence of imprisonment for a term not exceeding 10 years. Okay, this is the correct answer. Now moving to next question देखिए, a person arrested by a private person for committing non-bailable and cognizable offence shall be rearrested by police officer if such person comes under which of the following provision of the Code of Criminal Procedure? The correct answer is option D, that is section number 43. Okay, now moving to next question. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC? द करेक्ट आंसर इज इफ wife voluntarily refuses to live with the husband. Okay, so this is all about section number 100 125, that is maintenance of CRPC. Okay, now moving to next and last question देखिए, which of the following procedure is dealt with under section 164A of the Code of Criminal Procedure? The correct answer is medical examination of the victim of rape. Okay, so this is all about our today's session. If you like this video, please like, share and subscribe. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you very much. See you in the next video. Okay, thank you.